अब उन्होंने यहाँ पे डिफ्यूजन के पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। कैन यू हियर मी नाउ प्रॉपर्ली? Yes. सो अब उन्होंने डिफ्यूजन के रेट को डिस्कस किया हुआ है। डिफ्यूजन हम पहले भी डिस्कस कर सकते, वी हैव डिस्कस दैट बिफोर। द डिफ्यूजन इज बेसिकली diffusion is defined as the movement of particles from higher concentration to lower concentration. Diffusion depends on 2 points, and those are कि अगर हमारे पास जो है एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा होता है एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा होता है। तो उसने यहाँ पे डिस्कस किया कि डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस डिफ्यूजेस थ्रू अ लिक्विड, movement of particle again. Diffusion का मीनिंग movement of particle. Most solid expands when they melt, which is our next chapter, तो हम उसको डिटेल के अंदर करेंगे। The particles are slightly further apart in liquid than in solids, तो हमने ये पॉइंट पहले डिस्कस किया। Liquids expands a lot when they boil, because उनकी kinetic energy maximum point के ऊपर होती है at the boiling point, so उनका expansion rate भी faster होता है। We can think about this the other way around. Gases contract a lot when they condense. If all the air in the room you are now in was cold enough, it would condense to form a thin layer of liquid, 2 or 3 millimeter deep or so. ब्राउनियन मोशन का उसने मीनिंग समझाया हुआ, फोर्सेस दिखाई हुई है कि फोर्सेस एंड काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, जो हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जो हमने डिस्कस किया था। दिस रैंडम मोशन जो पार्टिकल की देखें, व्हाट हैपेंस व्हेन द गैस इज हीटेड, तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि व्हेन गैस इज हीटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड ड्यू टू दैट उनकी जो मूवमेंट होती है, जो रैंडम मोशन है, वो इंक्रीज होता है और उसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एक लॉ है विच वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर, वो हमें इसको जस्टिफाई भी करेगा कि प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या इफेक्ट पड़ता है। ये डिसइंक्रीज इन प्रेशर ये लिखा भी है। सो एज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, kinetic energy of the particle increases, so does the pressure. And what happens when the gas is compressed? Compression में क्या होगा? The particles will get closer to each other. So when they will get closer to each other, उनका volume क्या होगा? Decrease होगा. When the volume decreases and they come close to each other, now there are more possibilities of collisions between the particles. So now the particles would collide even more and the pressure would increase. ठीक है? Hence written here, decreasing the volume of gas increases its pressure. टेम्परेचर स्केल्स तो आपको आते हैं ना, डिग्री सी एंड केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन भी है, टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको आनी भी चाहिए। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल एंड इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। मैंने ऊपर नोट्स में आपको ये बताया भी था पहले, ठीक है। सेल्सियस टेम्परेचर स्केल होता है केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सी प्लस 273। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एब्सोल्यूट जीरो का। एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल्स टू -273 degree C, and absolute zero is the temperature at which the molecular motion of the particles comes to approximately zero हो जाता है हमारे पास, ठीक है। Not zero but approximately zero हो जाता है। What is absolute zero? Approximately 0 हो जाते हैं। The temperature at which the kinetic energy या molecular motion of the particle becomes approximately zero. And then हमारे पास temperature scales होते हैं। There are two fixed point, upper fixed point and lower fixed point. इनकी definitions भी आपको आनी चाहिए। Upper fixed point is 0 degree C, which is the melting point of pure ice at atmospheric pressure, and 100 degree C, which is the upper fixed point. It is the what it is, the boiling point of water at atmospheric pressure. So first we put the thermometer in melting ice, we get the यहाँ पे कहीं पे उन्होंने दिया भी होगा, वो वैसे हमारे सिलेबस से आउट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग we put the thermometer bulb into the melting ice and we see the level of liquid into the thermometer. Then we place the thermometer above, suspend the thermometer above a boiling water and see the rise of liquid in the thermometer. So supposedly, if thermometer is like this,
एक सेकंड, let me clear this one first. If this is a thermometer, my diagram is very bad. This is the bulb जिसको हमने पहले मेल्टिंग आइस में पुट किया. I couldn't write it. Let me take you back to the notes part. ये मेरे पास थर्मोमीटर है, ये उसका बल्ब है. इसको मैंने पहले सपोज लेवल ऑफ लिक्विड वाज समवेयर हियर इन द थर्मोमीटर कैपिलरी. ठीक है, जब मैंने इसको मेल्टिंग आइस में पुट किया, द लेवल ऑफ लिक्विड इज reaches to normal room temperature. हमारे पास कितना होता है 23 डिग्री सी या 22.5 डिग्री सी, दैट इज द रूम टेम्परेचर. नॉर्मल थर्मामीटर्स उस टेम्परेचर पे होता है. सबसे पहले हम लोग उसको किस में पुट करेंगे, मेल्टिंग आइस में, एंड द लेवल ऑफ लिक्विड में बी फॉल्स टू दिस पॉइंट. ठीक हो गया. अब हमारे पास ये लेंथ एट 0 डिग्री सी होगा. नाउ आई विल पुट इट इनटू 100 डिग्री सी, बॉइलिंग वाटर सस्पेंड करूंगा, and the level of liquid rises to this point. ठीक है, so from up this is the length at 100 degrees. Up for example this length came out to be 10 centimeter. ठीक है, I'll divide 10 centimeter with 100 points to get the value which would be 0.1 centimeter per degree C, which means this would be equals to 1 degree C. This is how thermometers are calibrated. थर्मोमीटर को पहले मेल्टिंग आइस पे पुट करते हैं, which is the lower fixed point, and upper fixed point and lower fixed point के दरम्यान में हमेशा कितना डिफरेंस होता है, 100 का होगा when it comes to water. upper fixed point. तो जो लेवल ऑफ लिक्विड, चेंज इन लेवल ऑफ लिक्विड आता है, उसके अंदर हम लोग फिर लेंथ मेजर करते हैं, उसके डिवाइड बाय 100 करते हैं और अपनी वैल्यू जो है वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं. That's how we measure the temperature. So upper fixed point and lower fixed point की definitions are absolute zero, which is 0 degree C, 0 Kelvin, sorry, and minus 273 degrees. 0 Kelvin and minus 273 degrees C, and it is a temperature at which the molecular motion of the particle approximately becomes 0. ठीक हो क्या? और जो केल्विन स्केल हमारे पास आता है, दैट इज Kelvin temperature is equals to degree C plus 273. So अगर आपने Kelvin 2 डिग्री C जाना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर डिग्री C टू Kelvin जाना है तो हम Kelvin temperature minus 273 is equals to degree C temperature. Clear up till this point? Are you clear up to this point, Peter? No, I don't. आपने मुझे अपर फिक्स पॉइंट की बता दी डेफिनेशन, लोअर फिक्स पॉइंट की 100 सेल्सियस वाली है. नहीं, 0 डिग्री. लोअर फिक्स पॉइंट से अपने माइंड में रखो ना कि 0 डिग्री सी इज द लोअर फिक्स पॉइंट, 100 डिग्री सी वुड बी द अपर फिक्स पॉइंट. ओके. एंड ये जो आपने लिखा है यहाँ पे डिग्रीज, ये कहीं बुक पे लिखे हुए हैं? Yes, I showed it from you the book first and then I wrote it out.
Okay. Everything is now. Okay. ये टेम्परेचर स्केल्स आ गया आपके पास, एक एग्जांपल भी सॉल्व हुई थी है, ये एब्सोल्यूट जीरो इन रिस्पेक्टिव डेफिनेशन. ठीक है, Okay. that would be the end of today's lecture.